dear student, once again welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher, and today once again we are going to discuss about the more about number. Dear student, you know very well the previous video is very important for you, and today also very important topic we have to discuss about, that is more about number. यस प्रीवियस क्लासों में हमने कुछ डिफरेंस नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे व्हाट इज द प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। फर्स्ट डे इस टॉपिक इस चैप्टर पे हम फर्स्ट डे जब डिस्कस किए थे तो हम इवन एंड ऑड नंबर क्या होता है ये हमने देखा था। सेकेंड डे इस टॉपिक पे हमने जब डिस्कस किया था तो उस पर हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर पे डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट, उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको जो प्रीवियस क्लास में जो जिस टॉपिक पे डिस्कस किया गया था वो आप टॉपिक आप बड़े अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस को हम राइट करेंगे और उसे सॉल्व करके आपके जो डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर्स गिवन इन द राइटिंग बोर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इवन नंबर एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर। दैट मींस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इवन नंबर एज अ सम ऑफ द टू प्राइम नंबर। हमें ऐसे इवन नंबर को राइट करना है जिसको ऐसे इवन नंबर को लेना है जिससे हम दो प्राइम नंबर बना सकते हैं। दोनों को ऐड करने पे हमारा एक कंपोजिट नंबर आ जाए, दैट मींस इवन नंबर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हम नंबर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा रहेगा 8। सपोज दैट योर सोल्यूशन इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल, इसे हम लिख सकते हैं 3 and plus 5। You know this is your even number, 8 is your even number and 3 plus 5, 3 is the prime number and 5 is also prime number. Is that clear? ये हमने भी क्या किया है, 8 को हमने लिया है और 8 हमारा एक क्या है, एक इवन नंबर, बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाई 2। 8 हमारा जो है वो 2 से डिविजिबल है और वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, और वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारा इवन नंबर होगा। इस टॉपिक पे हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर। सो यू नो वेरी वेल, 8 इज योर इवन नंबर बिकॉज 8 is divisible by 2. You know very well. And dear student, the sum of the two prime number, the first prime number is 3 and second prime number is 5. And sum of the two prime number, we get the 8 and 8 is your even number. One more question, that is secondly 10. 10 का हम क्या लिखेंगे, 10 का हम लिखेंगे 7 and plus 3 या 3 plus 7, same according to question number first, because 8 is your even number, so 10 is your also even number. And two prime number, the sum of the two prime number, the first is 3 and second is 7, and sum of the two prime number we get the 10 and 10 is your even number. And one more question, that is 20. The third 20, 3 plus 17, 3 is your also prime number and 17 will be also prime number. And the sum of the two prime number, we get the product is 20 and 20 is your even number. You know, easy है। हमें उस ऐसे नंबर को लेना है जो इवन होना चाहिए, और उन दोनों नंबर को अगर हम तोड़ते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। कंडीशन यही है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन 8 and we have to 8 divide into two prime number. First prime number is 3
and second prime number is 5, and sum of the two prime number, we get the product is 8, because 3 plus 5 is equal to 8. Easy, eh? So the second question, that is question number second, 10. 10 is also even number, and we have two prime number. We have to convert into two prime number. The first is 3 and second is 7, and sum of the two prime number, we get the product is 10, and 10 is, you know very well, that is even number. And question number third, similarly, according to question number first and second, your third question number is 20, and 20 is your even number, you know very well, because 20 is divisible by 2, and all whole number divisible by 2, that is called any whole number divisible by 2, that is called even number, and rest of the number are not even number, so because not divided by 2. So 20, question number third, I am repeat once again, 20 is your even number, and the two prime number, we have to find out two prime number, that is first 3 and second is 17, and sum of the two prime number, we get the 20, and 20 is your even number. One more question, that is 30. Your question number 4. Your question number 4, 13. You know very well. 13 and plus 17. 13 and plus 17. 13 and plus 17. You know, 13 is your prime number and 17 is your also prime number. And sum of the two prime number, that is 30, and 30 is your even number. You know, and one more and last question, that is question number 5, 36. 36 distribute two prime number, the first is 70 and second is 90. 17 plus 90, we get the product is 36, and 36 is your even number. So I hope clear to everyone. Your question instruction given here, express the following even number as sum of the two prime number. The first question 8 we have to divide two digits and two prime number, not two digits, two prime number, that is first 3 and second 5, and sum of the two prime number is we get the even number, that is 8. Second question, the second question 10 is your even number, and we have to divide two prime number. Yeah, we get two difference 3 and 7 digits, and 3 is also prime number and 7 is also prime number. So we get the product is 10, and 10 is your even number. So question number 3, 4 and 5 are similarly, no any doubt, no any confusion. And second question is very very important for you. So we have to write down in your writing board your question number 2. Dear student, your question number 2 is, give 5 prime number from 1 to 100. Mind this, give 5 prime number from 1 to 100, which can be expressed as the sum of the two prime number. Dear student, this type of questions are very very important for you. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये पता नहीं चलता. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं. गिव 5 प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100. हमें 1 to 100 में 5 ऐसे नंबर देने हैं जो क्या हो, जो प्राइम नंबर हो, एंड वी एक्सपेक्ट एज द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर. So, dear student, your solution is, you know very well, dear student, answer may vary. This is your word problem types questions, so don't confuse anybody. So answer may vary. One such possible answer
such a possible answer may vary one such a possible answer is as follow. The first is a prime number from 1 to 100. So prime number, अब हमें यहाँ से प्राइम नंबर लिखना है क्या कर 1 to 100, 1 to 100. प्राइम नंबर 1 to 100 is क्या होगा 2, 3, 5, 7. All number write down in your prime number. Mind this: 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 19, 23. 23 is your prime number, and then after 29, 31, and the next is 37, 43. All number write down in your prime number. Mind this: the first is 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Once more 47, and then after we have to write down 53, 59, 61. 53, 59, 61, and 19, 23, 29, 31, 37, 43, and 47, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67, 71, and one more 73, and one more 79, and 79, 83, 89, 83, 89, and 97. Your all prime number write down between 1 to 100. ये 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आए हैं हमने उसको राइट किया है. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, and 73, 79, 83, 89, and 97. That will be completed. The all number is your prime number. And then after, dear student, 13. Suppose that 13. अब हमें इसे क्या करना है 2 plus 11. 2 prime number and plus 11 is also prime number. 2 plus 11 is equal to 13. One more हो गया. And then after 19. Second 19. 2 and plus 17. 2 plus 17. We get the product is 19. And one more 31. 31 is equal to very easy. जैसे हमने 13 2 plus 11, 19 2 plus 17, 31 2 plus 29, 2 plus 29. We get the new product is 31. Means दोनों हमारे ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तभी हमारा क्या हो रहा है प्राइम नंबर ही मिला है. तो हमें प्राइम नंबर ही फाइंड आउट करने हैं इन नंबर से. क्या 2 plus 11, 2 is prime number, 11 is also prime number, and we get the product is also prime number. 19, 2 plus 17, 2 is the prime number and 17 is also prime number, and we get the product is 19. Then after second, third, 31 is also prime number, and the difference to prime number is 2 and plus 29, and the sum of the two prime number is 31, and 31 is also prime number. And secondly 61, you know 61 is a prime number, and the product of 259, 2 plus 59, the sum of the two product
we get the product is 61 and one more that is 73. 73 is equal to 2 plus 71. 2 plus 71, 2 is prime number and 71 is also prime number, and we get the product is 2 plus 71 is equal to 73 and 73 is your prime number. I hope question number first and question number second are very easy and आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.